to you the first All India Open Mock Test from 23rd of September to the 2nd of October. Go ahead and register now in the BYJU'S Exam Prep app and compete against thousands of aspirants. Good morning, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and this is our weekly editorial analysis. Yet again, seeing you for the second time in the week. And I hope you can hear and see me very, very clearly. Very good morning. If you could quickly confirm that, we will shoot with our session. The second one in the week. I hope you had watched yesterday's video. You had seen the article that I brought. You've already solved the question, the summary-based question that I brought. I'm going to be continuing with the same methodology today. Hi, everyone. Yes, clearly audible and visible. So now quickly, let's see what are we going to be doing today. What do I have for you today? What are we going to be learning today? But before all that, our window for CLAT 2023's open All India Mega Mock has already started. The window is open and the window would close on 2nd of October. So make sure you already have registered yourself for this mock. You've already taken the mock. If you haven't taken it yet, make sure you do that as soon as possible before the window closes on 2nd of October. So what are we going to be doing in the class? I have one article for you and I have a question for you towards the end. The article, while we read that, we'll attempt at understanding how you're supposed to read an RC. कौन सी लाइंस पे फोकस करना है, कौन सी लाइंस को मिस करना है, कौन सी लाइंस आर्ग्यूमेंट है, कैसे इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, कैसे टोन निकालते हैं, कैसे मेन आइडिया निकालते हैं, थीमेटिक हाईलाइट क्या है आर्टिकल का, हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं. एंड विद द प्रैक्टिस दैट वी डू bi-weekly, we understand, we get better with reading comprehensions because ultimately CLAT ALET दोनों predominantly reading comprehension based exams हो गए हैं. The articles that I bring it from various editorials. I have another article that I brought today from an international newspaper. You must be thinking, मैम हिंदू के आर्टिकल क्यों नहीं ले रहे हो? Because हिंदू के आर्टिकल तो तुम वैसे भी पढ़ लेते हो, है ना? और बहुत कुछ डिफिकल्ट आ नहीं रहा उसमें. So I try to bring something that's tricky. Today's article for sure is tricky. Not as easy as yesterday's one. कल का काफी easy था, cake walk था. But I'm sure you're going to have a lot of fun reading today's article. Archita, make sure you watch that, okay? एडिटोरियल के लिए कोई बुक, आशी कोई बुक की जरूरत नहीं है. आप अभी भी अगर रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट करोगे ना एडिटोरियल, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. सो इफ यू आर नॉट रीडिंग द एडिटोरियल्स डेली, you should start doing that right now. At least 4 articles every day. And of course, towards the end, मैं आपके लिए वो जो कल सरप्राइज मैंने डिस्क्लोज कर दिया था, I have a question for you. एक पैराग्राफ होगा, उसकी 4 समरीज होंगी. आपको एक समरी चूज करके बताना है कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट समरी या जिस्ट या आर्ग्यूमेंट बताती है पैराग्राफ का. So we'll be doing that question towards the end of the class as well. And अच्छा, एक बात और बताओ, आपने एऑन के वो आर्टिकल्स पढ़े? कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा जो मैंने आपको कल रेकमेंड किया था? पढ़ा तो कैसा लगा? समझ में आया? डिफिकल्ट लगा? I'd like to know that from you. सारे न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे न्यूज़पेपर जरूरी नहीं है. आप एक न्यूज़पेपर पकड़ो, लेकिन वो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, वोकैबुलरी, वो सब कुछ इंप्रूव करेगा. तो एक न्यूज़पेपर पकड़ो, हिंदू प्रीडोमिनेटली, और उसको तमीज से पढ़ो. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, यस, यू रेड दैट? ओके, आशी कल की क्लास में 2 आर्टिकल्स रेकमेंड किए थे, प्लीज पढ़ लेना. नॉट सो डिफिकल्ट. यस, द क्रेविंग्स वन. चलो, आई एम ग्लैड दैट यू हैव रेड द आर्टिकल, यू फाउंड दैट बेनिफिशियल. स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल के साथ. फर्स्ट पेज शो करती हूँ, पढ़ो, देखो ऑथर बोल क्या रहा है. यहाँ ये ढूंढना इस आर्टिकल में थोड़ा डिफिकल्ट है कि ऑथर बोलना क्या चाहता है. थोड़ा डिफिकल्ट वोकैबुलरी है, थोड़ा डिफिकल्ट मेन आइडिया भी है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट टुडे. पेज नंबर 1, रीड दिस, सेंड मी अ डन. फोकस किस पे करना है? फोकस करना है ऑथर के आर्ग्यूमेंट पे, और प्रेमिस को एब्सोल्युटली स्किप करना है. रीड दिस एंड सेंड मी अ डन.
Now my first question, argument क्या है author का? क्या बोल रहा author? What is he hinting to? What is the main argument of the author that the author is putting at this page? Argument batao, I'm waiting. Last question or the first question, Shreya? अच्छा देखो, with the crisis, exactly that's the last line. Yes, not the first question. It's the last line. Right, the last paragraph. अब देखो, सबसे पहले understand जब ऐसे questions होते हैं paragraph में, इन questions जब author एक question का set लिखता है paragraph में, why are these questions put up? Let's understand that. Questions are always put up to grab your attention. And very, very, very likely, 99% of the times, these questions will be answered by the author in the same passage. Not the same paragraph, maybe, not the same page, maybe, but author उन questions को answer करेगा. तो अगर question पूछा है, तो आप बहुत carefully उस question का analysis करेंगे कि author आपको किस तरफ draw कर रहा है. Probably those questions will take you closer to the main idea, the argument, the theme, and eventually lead to a lot of inferential questions. तो questions पे बहुत ध्यान देना है और probably very very likely इन questions का आंसर पैराग्राफ में होगा, तो पैराग्राफ eventually पूरा उसी चीज को डिस्कस करने के लिए होगा. एक बार जिस देखते हैं इस पूरे पेज का. So of course the article is about mental health की crisis, अगर मैं crisis word use करती हूँ तो. And सबसे पहला क्वेश्चन ऑथर पुट करता है कि व्हाट इज द क्योर फॉर आवर करंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस इज नॉट मोर मेंटल हेल्थ केयर. देखो, अगर आप एक चीज की सिचुएशन को देखते हो, एक प्रॉब्लम को देखते हो, तो उसका सोल्यूशन आप ऑब्वियसली और ज्यादा केयर प्रोवाइड करना होता है. अगर मेंटल हेल्थ क्राइसिस है तो बहुत सारा मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, वो क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा. लेकिन क्या ज्यादा मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही हमारा सोल्यूशन है? Looks like the author is at a little disagreement with this fact कि शायद ज्यादा केयर प्रोवाइड करना हमारा सोल्यूशन नहीं है. Looks like that till now. इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे कि ऑथर कैसे देखता है इसको. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स सिंस वी टॉकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, तो कोविड-19 को तो टच अपॉन करना ही है, बिकॉज मेंटल हेल्थ का बूम आया ही आफ्टर कोविड-19 इन द इंटायर वर्ल्ड. उसके पहले वो इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं था. सो कोविड-19 विल सर्टेनली बी टच्ड अपॉन. आगे देखते हैं. He says a crisis that affects mental health is not the same thing as a crisis of mental health. इस लाइन का क्या मतलब है? अगर आपने ये लाइन नहीं समझी, आपको ये लाइन समझना बहुत जरूरी था. अच्छा, मैम ये क्लास डेली होती है, ये हम डेली 11 AM एडिटोरियल्स और हिंदू की एनालिसिस लेते हैं. 5 days a week जीके होता है, 2 days a week एडिटोरियल्स होता है. So editorials का एनालिसिस होता है Fridays and Saturdays. Mental health crisis can't be solved with just mental health care. We must understand what the crisis is. Yes, Ashi. That's the whole point the author is bringing here. Exactly. अब ये लाइन ढंग से समझो, ये क्या बोल रहा है. वो कह रहा है कि अगर आप देखते हो क्राइसिस किस तरीके से यूज, इट्स बेसिकली अ मॉडिफायर क्वेश्चन. क्राइसिस अब जिस वर्ड के साथ लगाओगे उस चीज की क्राइसिस बन जाएगी. पहला है, एक क्राइसिस हुई जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया. फॉर एग्जांपल कोविड-19 एक क्राइसिस था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया. ये एक अलग सिचुएशन है. दूसरा है, क्या मेंटल हेल्थ अपने आप में एक क्राइसिस है? कि मेंटल हेल्थ एक पुअर सिचुएशन में है, उसको बहुत सारी अटेंशन चाहिए, मेंटल हेल्थ पे लोगों को ध्यान देना जरूरी है, ये एक सिचुएशन क्राइसिस हो गई. तो क्या मेंटल हेल्थ अपने आप में एक क्राइसिस है या फिर कोई एक अलग क्राइसिस है जिसने मेंटल हेल्थ को इट गेव बर्थ टू इट? That's what the question here is. And the last question, of course, the author puts up, in order to understand the solution of this mental health problem, the crisis, we have to understand ये crisis है किस चीज की. ये mental health की crisis है या COVID की crisis है या कोई और crisis है जिस वजह से लोगों की mental health disturbed है. We'll have to understand that. अगर हम उसको समझेंगे तो हम automatically solution to mental health crisis को समझ लेंगे. That's the gist of the whole page. Let's move to page number 2 and understand what the author talks about furthermore. Page number 2, read this and pay attention to the author's argument.
Hi, Sita, read the page. A very important question that I have. The question is, reification को author positively देख रहा है या negatively? How does the author view reification related to mental health crisis? Think carefully and then answer. Okay, Stuti? How does the author see reification? Positively or negatively? Negatively. Absolutely. Absolutely negatively. Now let's understand reification होता क्या है और उसको कैसे author ने एक mental health situation के साथ link किया है. Reification होता है जब हम एक नॉन कंक्रीट चीज को एक कंक्रीट फॉर्म दे देते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को हम एक फिजिकल फॉर्म दे देते हैं या फिर एक कंक्रीट फॉर्म दे देते हैं या फिर एक टैंजिबल आइडेंटिटी दे देते हैं. ये होता है रीफिकेशन. ओके, नाउ रीफिकेशन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ऑथर उसको नेगेटिवली यूज कर रहा है. रीफिकेशन को यूज करके ऑथर किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है? What exactly is he trying to criticize by using the word reification, linking reification to mental health crisis? वो eventually किस चीज के criticism पे आ रहा है इस पूरे पैराग्राफ के examples के through? Explain that. This is a tricky question. If you are able to answer this, you will be able to understand the remaining passage. By using reification, what exactly is the author trying to criticize? Okay. The way a crisis is seen by people, mental health. Mental health को criticism नहीं दे रहा मुस्कान author. Mental health को तो resolve करने की कोशिश कर रहा है. We never try to figure out what causes mental health. Okay. Power of individual harming normal people's life. Saujanya, Iram, Preeti, absolutely correct. How the ones who caused the problem are she absolutely correct. Basically, the author, yes Neha, yes Shreya, cause क्या है? Cause अगर, so basically the author is linking the mental health crisis to calling it a political problem. He says इसका cause political है. तो उसने रीफिकेशन यूज किया ये समझाने के लिए कि कैसे मेंटल हेल्थ क्राइसिस पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से आया है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट, लेट्स पे अटेंशन टू इट. ऑथर सेज रीफिकेशन बहुत बार यूज करते हैं पॉलिटिशियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉज करने के लिए. जैसे आप देखो ये एग्जाम्पल, हमने सोशल मीडिया एडिक्शन, हमने एक फ्रेज यूज कर लिया कि लोग हैं एडिक्टेड हो गए हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फेसबुक के. बट ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आर दीज नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ टेक ओलिगोपोलीज? टेक जायंट्स है ये, इनके साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी का. ये ओलिगोपोली मार्केट है, ये ऑलमोस्ट यूनिटरी लीडर्स हैं मार्केट के. हमने इनको क्रिटिसाइज ना करके हमने इसको एक दूसरा नाम दे दिया रीफिकेशन के थ्रू, सोशल मीडिया एडिक्शन. पॉलिटिशियंस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉज कर दी यहां. सिमिलरली कैसे जॉइंट कॉर्पोरेट और उनकी ग्रीड ने हमारे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्लाइमेट चेंज को, और उसको हमने हीट वेव का नाम दे दिया. पॉलिटिशियंस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां भी डॉज कर दी. सिमिलरली हमने इन्फ्लेशन का नाम दिया. इन्फ्लेशन कहां से आया? ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इश्यू की वजह से ही आया.
So है ये सारे political issues, but these politicians are merely dodging the responsibility by using reification, giving it a different name, a concrete name, जहां responsibility you and I हम commoners के ऊपर है. हो सकता है mental health crisis भी एक reification के थ्रू नेम दे दिया गया है एक ऐसे ही पॉलिटिकल इशू का. कैन यू गेस व्हाट कुड बी द पॉलिटिकल इशू जिस वजह से आप और हम शायद मेंटल हेल्थ क्राइसिस से सफर कर रहे हैं? No, Max Connor, CLAT is going to be happening every year in December now. Now think of it, ऐसी क्या पॉलिटिकल इशू हो सकता है जिस वजह से आप और हम मेंटल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं? Such a brilliant paragraph. Do you love reading this today? Religious हो सकता है, सोचो, करप्शन हो सकता है क्योंकि वो करप्शन का इंपैक्ट हम पे आएगा. इन्फ्लेशन हो सकता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन सबसे कॉमन हो सकता है, एब्सोल्युटली. और probably no jobs. Yes, all of these could be reasons. इन सबका कोर रीजन तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल इनजस्टिस है. Eventually, you and I as commoners are sufferers. Okay, let's move on with the next page. Let's understand author कैसे लिंक करता है इस पॉलिटिकल क्राइसिस को मेंटल हेल्थ क्राइसिस के साथ. पेज नंबर 3. Okay, now the author uses another term and that's medicalization. देखो, this line absolutely makes the entire analysis we did in the previous paragraph absolutely clear. He says there's a struggle, there's a political struggle, and then there's a social crisis. This will lead to this. Social crisis, for example, inflation, or for example, mental health crisis. That's because of the political struggle that we have. Okay, and then people they have a common term, sociologists have a term they use to explain this kind of a situation. That's medicalization. Medicalization क्या होता है? You go to a doctor, okay, you say my stomach hurts, my head hurts. What will he do? He'll give you medication to cure it. That's medicalization. You are an individual, you are suffering, you will be given medication to be cured. The doctors probably would not try to find or fret about what caused the problem. My eyesight is weak, okay, I wear glasses. Probably, and then kids these days, they wear glasses pretty early in their lives. Why do they do that? Probably because the food that we eat is adulterated. So we get no nutrients and thus we get weak eyesight. Doctor आपको चश्मा बना देगा, but he will not fret about तुम्हारा डाइट अडल्ट्रेटेड था क्योंकि गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बना दिए थे और उस वजह से आपकी डाइट अडल्ट्रेटेड होने लग गई थी, मिक्सिंग होने लग गई थी उसके अंदर और इस वजह से आपको चश्मा. डॉक्टर्स विल नॉट वरी अबाउट दैट, उनका काम आपको ट्रीट करना है. दैट इज मेडिकलाइजेशन एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट रीफिकेशन इज. पॉलिटिक्स में क्या हुआ, पॉलिटिशियंस ने क्या किया, वी डोंट केयर, तुम चश्मा पहनो बिकॉज योर आई साइट इज वीक. दैट्स हाउ रीफिकेशन इज लिंक्ड टू मेडिकलाइजेशन. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ medicalization is linked to reification, and that's how you answer this question. That's what mind mapping is. आया सबको समझ में? Okay, yeah, all right, चलो आगे बढ़ते हैं. This paragraph was simple, super easy, no argument here. Let's skim this part. Next paragraph, read this and tell me what lines are the arguments here.
Is there an argument in the page? Anxiety is when you feel uneasy, restless, in a layman term. Mental health sees anxiety in a different light. It's a pretty technical thing. I'll not delve into that. What's the argument the author puts here? Any argument the author makes about telling about common disorders? Author telling about common disorders. Okay. It's the last one. Yes. Only the last line. Of course, the first paragraph here in the page is complete premise. We can absolutely skip it. By this time, अगर आपने ये लाइन पढ़ ली, आपको ये बिल्कुल भी पढ़ने का नीड नहीं था. यहां पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये इसी चीज को डेटा के साथ जस्टिफाई कर रहा है. This part should have been skimmed. If you did not skim it, you've wasted your time. Learn to do that. The moment you know, okay, nobody can deny कि distress increase हो रहा है. Take two examples. मुझे समझने की नीड नहीं है क्या एग्जाम्पल, मुझे पता है मेंटल डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है. ओके और उसी को जस्टिफाई करने के लिए ऑथर ने लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा, there's a claim people think that it's normal to be anxious and you to feel sadness when this is a difficult situation, but that's not normal, is what the author talks about. Let's go to the next page here, everyone. Okay, and I think that's the last page. Chalo ye page padho and then I'll ask you questions. What is the argument? Which line is the argument? And do you see the connection between mental health crisis and politicians playing a game here? And how we can solve the mental health crisis? How? The first question is linked to this paragraph. The main idea is right here. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े एक बार. मैंने आपको हमेशा बोला है फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर पैसेज के. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या मेंटल हेल्थ क्राइसिस का क्योर ज्यादा मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है? द ऑथर अग्रीज और डिसअग्रीज विद दैट? बताओ जल्दी से. इज द सॉल्यूशन टू मेंटल health crisis providing more mental health care? The author agrees or disagrees with it? Absolutely disagrees. He says no. ज्यादा हेल्थ केयर, ज्यादा मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इज नॉट अ सोल्यूशन. सोल्यूशन इज उसके कॉज को क्योर करो. उसका कॉज क्या है? हाउसिंग प्रोवाइड करोगे लोगों को, फूड प्रोवाइड करोगे, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, जॉब सिक्योरिटी, XYZ, ये सारे सोशल इश्यूज को सॉल्व कर दोगे तो मेंटल हेल्थ का इशू होगा ही नहीं. तो मेंटल हेल्थ को होने से रोको, उसको ठीक करना इज नॉट द सोल्यूशन. All those people we know of, the prominent personalities who had succumbed to mental health, who lost their lives to mental health, probably we could have stopped them. But that's not the solution. The solution is how we could have prevented them from suffering from such a mental disorder. By providing all these basic necessities to everyone, commoners, we'll make sure that there's no mental health issue only. The care to baad mein provide karna. Also, see, there's a word bolstering. Bolstering is to support. Okay, I hope you understood that. Also, यहाँ एक बहुत बड़ा claim किया author ने that there are startups and there are other organizations who are just profiting out of this mental health crisis. उस profit को भी आपको control करना है because it will become an industry very very soon then. So just control the basic cause of it. So you see the last two lines समझाऊं नहीं? हाँ, okay, last two lines समझते हैं. It also risks pathologizing the very emotions we are going to need to harness for their political power if we are going to win solutions. देखो,
द ऑथर सेज अगर आपको सोल्यूशन चाहिए ना तो आपको सबसे पहले उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा. इफ यू फाइंड द कॉज, इवेंचुअली you will be stronger emotionally, physically, and eventually you'll be able to fight the entire political game that's being played. So you find the cause, you treat it, you nip it in the bud, and thus you become a stronger, emotionally stronger person so that you're able to fight with the entire political fiasco that's going on. I hope that's clear to you. All right. So now that was the article for today. You have a little bit of homework. Since you already know the summary for today's article, you have to write down the tone of the author under my video in the comment section. Okay, that's what your homework is. Tone of the author likhna hai aapko. Now the class doesn't end here. I have a paragraph for you. वो paragraph आपको पढ़ना है. It will be followed by 4 options that you have. और 4 में से आपको एक summary, appropriate summary choose करना है of the article that, the paragraph that I have given you. Ready for that, everyone? Here you go. So read the paragraph and then I'll show you the options on the next page. Here you go. Shreya, that absolutely is personification. Tone of the author under my video in the comment section, not in the chat box right now. Done? Taking you to the options. Tell me what the main idea is out of the 4 options. Very close options. Good luck. What's your answer? So Avi says D. All right, Avi. Priyanka also says D. देखते हैं D क्या सबका D आंसर. पैसेज देखना है, ये देखो पैसेज. Everyone says D. A. थोड़ा इजी हो गया क्या आज का क्वेश्चन? There are 2 very close options. Rather 3 very close options. A and D. So most of you are saying A and D. Let's understand. So in Hindi, पैराग्राफ ये बोल रहा है कि देखो आज के टाइम में अगर आप खाली बैठे हो ना तो ये एक पाप है, और अगर आप खूब काम कर रहे हो तो आप सबसे अच्छे पर्सन हो वर्ल्ड के, आप बहुत प्रोडक्टिव हो. और इस वजह से क्योंकि ऑब्सेशन हो गया है लोगों को काम करने से, लोग बस काम कर रहे हैं. They don't enjoy their work. The work is meaningless. Yet they're just working क्योंकि काम करना जरूरी है. ये वर्च्यू है, ये सबसे अच्छी चीज है, ये सबसे मॉरली करेक्ट चीज है कि काम करता रहना चाहिए और खूब काम करना चाहिए. इवेंचुअली काम तो आपका मीनिंगलेस है, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क. ये तो वन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपने इतना काम किया है, अगर आपने इतना हार्डवर्क किया है, तो इवेंचुअली यही हार्डवर्क आपकी लाइफ अच्छी बना रहा है, आपको पैसा अर्न करने में हेल्प कर रहा है, आपको अच्छी हेल्थ दे रहा है, आपको अच्छी एजुकेशन दे रहा है, आपको अच्छी सेविंग दे रहा है, आपको अच्छा घर दे रहा है.
तो इसके बेनिफिट भी तो हैं। तो चाहे काम मीनिंगलेस है आपका, लेकिन इंडस्ट्रियस होना चाहिए क्योंकि इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। रादर देन जस्ट सिटिंग आइडल कि मुझे काम नहीं पसंद है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं खाली बैठूंगा। लाइफ की मोनोटनी से निकलो बाहर, काम करोगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी आपको। सो देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ व्यू, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स मेंशन्ड अबाउट बीइंग इंडस्ट्रियस। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट, राइट? या सो सबसे पहले देखते हैं सी। Hard work has overtaken all aspects of our lives and has enabled economic prosperity, but it is important that people reserve their leisure time for some idleness. क्या ऑथर ने ये कहीं भी हिंट दिया है कि थोड़ा खाली होना चाहिए तुम्हें? क्या कहीं ये मेंशन किया, क्या कहीं ये सजेशन आया कि थोड़ा आइडलनेस अच्छा है, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, दिन में 2 घंटा सोना चाहिए? नहीं दिया ना सजेशन, तो सी गलत हो गया। बी सेज despite some detractors, hard work is essential in today's world to enable economic progress, for education and health, to propel innovations and make life easier. ये तो हो गया पैराग्राफ का सेकंड हाफ, बट फर्स्ट हाफ तो मेंशन है ही नहीं इसमें, जहां आइडलनेस इज अ bad thing because industriousness is a bad thing because you just keep doing the work even if the work is meaningless for you. वो perspective is not covered up in this part. This is narrow. We have to find a broader answer. I'll eliminate B. A or D में से what did you mark? Okay, let's check out D. While the idolization of work has propelled people into meaningless jobs, the first half. This one. Second, it has also led to tremendous social benefits and prosperity and innovation. The second half. Was my question divided into two parts, two arguments? Yes. Option D includes both the arguments. Your answer is D. Let's eliminate A. Some believe that hard work has been glorified to the extent that it has become meaningless and led to greater idleness, but it has also enormous. Of course, there are two perspectives here. What is wrong with A? A भी दो argument present कर रहा है. What part makes A wrong is my question. How do you eliminate A? I'll wait for your answer. What's wrong with A? Glorified to an extent? Yes, Iram. Anyone else? Some believe. Exactly. These are a few words जो हमारे पैराग्राफ में कहीं hinting नहीं है इन चीजों की. Right? And that's exactly why D becomes a bigger picture option encompassing exactly what the passage refers to. Correct. So, eventually our correct answer here is a D. Now guys, if you still haven't liked the video, ये तो गुरु दक्षिणा दे दो, like कर दो. Comment under my video if you're watching it recorded and if you think these classes are beneficial for you. And आपका homework जरूर कर लेना, comment करना वीडियो के अंदर about the tone of the author of the previous article that we did. I'll be checking that. Share the video with your friends. Subscribe to the channel if you haven't done that yet. अभी भी नहीं दिया ऑल इंडिया ओपन मॉक तो ये दे दो जल्दी से, 2 अक्टूबर को विंडो क्लोज हो जाएगा. Then you can sit idle. अभी इंडस्ट्रियस हो जाओ, दे दो मॉक, okay? And I'll be seeing you next Friday. Okay, till then, read articles, read a lot of them. I shall see you very, very soon. Have a very good day, everyone. God bless you.